Hi Girish, good morning. Good morning. So I have a little bit throat infection today, so you might be having my voice little bit off. Is anything background noise is coming from my side to you? Oh, it is clear from your It side. is clear, Yeah, and my voice as well. your voice is bit low. It's Mm, okay. Is it like I'm listening from far side? maybe because I use same setting for each candidate for each interview. Okay. Okay, so I was going through your resume. So you have 2.1 years of experience, correct? In Angular, and relevant experience is 4 year. No, no. Total year four, correct? Yeah, 4.2. Okay. totally. So what exactly you worked apart from Angular in 2 years? Like in 2 years, I have worked on Node.js as well, MongoDB and JavaScript and HTML, CSS, all like Okay. So front end. In Angular you worked only for 2 years. Yeah. Okay. So you mentioned like that here. So you mentioned like software engineer with 2.1 years relevant experience in JavaScript, Angular, Express.js, HTML, CSS. So you Yes. should Yes. put only 2.1 years relevant experience in Angular. Okay. Okay. So you should not put JavaScript as well in that then. If you work for a 4 year, then you should put, I would suggest you directly put 4 years of experience in Angular. So that is fine. Okay. If you are confident right now working with Angular, so why to show relevant and irrelevant experience? So at Okay. least you can ask for a more package, correct? So see, they will not think about that. You have experience, you are giving interview, you are clearing interview. Then if you say them, I did have only 2 years of experience in Angular, then they can give you less package as well. If you tell them 4 years of experience in Angular, and if you are able to clear your interview, then you can expect more. So this is a small game, but you have to crack it. Yeah, but if I'm writing a 4 years of experience, that means like the questions or the counter questions will be experience Yeah, of. yeah. So that's what I'm saying now. So if right now you are preparing for interview, so prepare for 4 years of experience, not prepare for 2 years. Okay, Correct. So see, if I'm the HR, I will ask you how much package I will, how much package you want. If you say 10 lakh, okay. But I am looking for a candidate who has experience in Angular 2 years, and I will give only 7 lakh. Then what you will say that in that case? So you will take 7 lakh or you will ask for 10 lakh then again. So that is the game. So that is where I want to play over there. So try to see the videos we have already in the YouTube, and you can try for other candidates as well and try to give those answers. So if you're able to complete those, then I think you're fine. So first of all, so have you really work in Angular? working. Have you really work in Angular? So that is the one question. Yeah, I worked on. Like, Okay, so you added your personal projects over here, yeah, correct? I have ended my personal projects as well. Yeah, so let me show you my resume. My resume means Sure. I have one resume. Let me share my screen. Give me a minute. So I will show you how to write down the things in the resume. So in that way, your resume will be a little bit attractive. I'm sharing my screen. Sure. Sorry for my throat. Uh, okay, can you see my screen? Yeah, I can see. Okay, so this is how you can maintain your resume. Okay, so you should tell about your experience first. Okay, so I have put it 7 years of experience in Angular. Okay, then apart from that, what I have been working with it. So the same thing will be here for you. It will add it as a Express.js at the end after Mhm. Bootstrap. Okay, so this will be your summary line. Okay, so and after that you can put your key highlight. What exactly you have been working in Angular. If you are applying for Angular, then you should put more things on Angular instead of putting Mhm. other things. So I can see your resume. You have added your project description, most of things, correct? Yes. So don't add like that. So you can maintain your resume very easily. So you can write down the small thing which you have been working on right now and the previous project. So this will be your key highlights. This is your objective or summary. This is your highlight.
and this will be your profile where you worked on. Okay. And here it comes another thing. So education, if you want to add, you can add. Then technical skills, you already might be added somewhere. This is the responsibility what you have been working on. So this is more important for interviewer and the HR. Okay, this one thing and these two things. This is more important for you and your interviewer. They will not see what is the technical skills, what is your education, how many companies you have been working. They will know only, they want to know only the responsibilities and your highlight skills. That's it. Then you can write down your detail, whatever you want to add, project description and all. So this is how you can maintain your resume. Then this will be I think the small resume for you as a this is your first company, correct? Or second? This is second one. Like I worked Okay, around 9 months on second company. okay. So I think you can try to put like this, so it will be easy to show your skill set and highlighted key area for you, because those things are missing in your resume. I cannot see those. You added your you added your Mhm. project description. That's fine. Here as well, project description, but nothing about you. Okay. Only single line you have added somewhere. So that's it. So this is not Okay. enough, I think. If you can reduce things from here, I have been working on the library. I have created a code coverage 100%. This thing should come your highlighted key highlights. Okay. Got it. Okay. So change this resume according to your need. Okay. I'm stopping my sharing. And you can take this resume from TopMate in the free if you want to take. So We have already there in the TopMate link. I have one question. Mm-hmm. Like I have read through most of the websites. Like resume for one page is okay. Like more than one page is like quite difficult to shortlist. No, no, As no, a no. That's where the game is now. okay. So if you see resume, let me share again because you miss one thing. I have two pages here. If you see, Yes. okay. So you said that your resume should be only one page. Okay. Yeah. So Uh-huh. everything is here in the single page. Your interview don't need to read this second page as well. Everything is here. Are you Mhm. getting now? Your company information, your responsibilities, your skills, everything is in a single page. They don't even look here. Correct. So that's why I wanted to tell you. So create In the in the second page, we are having a details types of of. projects. Yeah. So see, you are selling yourself. So in your resume, your expertise and all those things should be there because you are selling yourself. Mhm. That is what I meant to say. If you put your related things over here, then interviewer will not be interested on this. What is your father name? What is date of birth? What is the project? What tech stack you use? Because most of things you have added here itself in the technical skill. So they don't even look this far. This. Yeah. Okay. So Okay. these things only enough for you. Okay. But see, if you are not working in the multiple companies, then only your resume will be on a single page. Okay. When you have experience 5 years, 6 years, then your resume automatically will increase because you have been working multiple projects. Yeah. Okay. Correct. So that is a myth of single resume, single page. Okay. Okay. So try to edit like this. Maybe I'm not sure. I have been seeing the resume which you are share. So the new people are coming with that color theming and all. So, but the Mhm. none of the HR and interviewer will interested in the color and everything. They want to Yes. understand yourself only. Okay. So if you feel you can edit like this, then that's fine. Otherwise, whatever resume you have right now, you can edit in this itself. So that is also fine. Okay. Okay. Anything else in this, Girish? Uh, like resume is okay. Like Yep. in the I have one more question. Like in the project details. Mm-hmm. So if I remove the key skills, like whatever like responsibilities I have handled in the projects, I mention in the key skills or in different way. So do I have to mention in that project details or synopsis also? No, you have to add the business over there. What exactly business?
You worked on the Okay, test that book. output, what I Uh, have said. so you can add the business of it. So Okay. if you are working on the test book, you have implemented some of the modules over there. Then you can work on this module, implemented these things in this project like this. Okay. Okay. And you can add the tech stack as well over there. What tech stack exactly you used for that? Okay. Yeah, that's clear now. Yeah, yeah. So this is how you can maintain your resume. So if I see the 5 or 6 bulleted point you have added, most of them are similar in both the project. Okay, so that is the redundant things, correct? You added So, utilize npm package JavaScript library. Again, in the first in utilizes npm packages and express library. So if you're working in Angular, you already been using npm. That is considerable. You don't need to write that. okay. Okay. Yeah. Is this clear now? Yeah, this is clear. So, but if I'm working on a single type of technology, so that I am using again and again for each and every project, right? That's fine. So, Nah. So I'm not saying that you don't need to write. Let me mhm. share again. So you are missing. Can you see second page now? Yeah, Project one synopsis. Okay. The project business over here. Business, what business exactly you implemented in this project? And this yeah, is where you can add your tools and technologies. okay, okay. You got now? Yeah, yeah, yeah. Yes. Yeah. So Yeah, this is what I meant to say. So you said that you have been working in, suppose I worked in the first project Angular 5, then I'm working on Angular 9. So yeah, you can mention here, that's it. So correct. So you yeah, don't yeah. I need missed to, that line. Yeah, that's yeah. correct. So yeah. So that's why I have created a resume like this. So everything should be in a single page and single thing. So this first Clear. page is for you. You are selling yourself to the company, correct? And Mm-hmm. this is for the which you have been working. This is your extra thing. Okay. So put Okay. everything, whatever you have in your first project. Okay. Sorry, first page, not in the first. Yeah, and the project details should be on the second page. Yep, correct. Okay. Okay. So, Girish, before going to interview, so what are the things you want me to help you with this mock interview today? Like there are a lot of things right now coming in my mind, so if I Mm-hmm. see, like first of all, like basic the maybe my resume is I don't know how it is shortlisting, but after shortlisting there is a like confusion, like if the interviewer is asking for the 2 years or 4 years of experience, I'm not getting that part, and I am answering that most of the questions, but maybe I'm missing some of the types, so So, that that do is you not have? getting me selected. Okay. So, okay. So you are getting call, but you are not able to clear the interview, correct? Yeah, yeah. So Okay. So, can you please tell me what type of question they asked you and you are not able to answer those? Means any. sometimes they start with the JavaScript, sometimes they start with the like Angular, or So, the first of all, the first question is only the introduce about yourself. So in that question, I give around five 5 minutes, around 5 minutes for my introduction and details about, and even the roles and responsibilities, whatever I'm taking care, and about the projects which I have handled in your both the Girish, companies. Girish, Yeah. your introduction should be only 1 minute Okay. because as an interviewer, I will not listen you for 5 minutes only for single thing because I have to take other interviews as well. Correct. I'm not saying me, but as an interviewer, if they have Okay. to take the 5 interviews, 30 minutes. If you take on 5 minutes, only introduction, then the 25 minutes, how they will judge you. So in that one So minute, do I have to cover the project details and responsibilities as well? I will tell you, just note down these things somewhere. Noting Tell, down. okay. So you have to tell your name. My name is Girish Gujar. I have 4.2 years of experience in a front end in a development and Okay. relevant experience in Angular is 2 years. Okay. Is this fine this much? Yeah. Okay. Currently I'm working in this company. Okay. Next line would be this. Okay. Okay.
So in this company, I'm working on this project. Okay. Company then project. Okay. So in this project, I'm right now working on this module. I have been implementing this. Okay. Then you should take talk about your skills, what you are using in this project. So I'm using Angular this version. I have implemented such kind of features to create this application. Okay. So this is your current project, current company, current tech skill, current experience, your name. Okay. I'm going from back to lower to back. Okay. This is almost will take I think 40 seconds. I think. Yeah, like Okay. Then you can tell, apart from my current project, I have worked on this project in my previous company. So over there as well, I used Angular and all those skill sets. So that's it. That is fine. You don't need to talk about the more project, because see here, they don't interested in your project. They are interested in you because they are yes, hiring you, not the project. So that's where so this is a package. You have to give them as a, you, first line I have tell you, you are selling yourself. So you don't focus on the projects, focus on you only. They should think about 30 minutes, they should think about yourself only. Nothing, no, 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 none of, if you have doubt, please ask now. We can yeah, discuss. that is very helpful. Like first point Okay. that you told me. Yeah. So, Every time I'm doing this mistake, I don't okay. know why. After that, I got confused in the questions. But sometimes the first question get complicated for me. Correct. So, uh, uh, I have another question. If some like interviewer is asking a question, like, and after that, do I have to take a pause or directly start whatever is coming in my mind? Like, so sometimes it get correct, but sometimes I got confused in that part. Okay. So once interviewer asks you a question, Yeah, so how to answer, correct? yeah. Okay. So, okay. So suppose I ask you now, what is hoisting? Then how you start? Sorry, what is? What is hoisting in JavaScript? If I ask you this question now, then how you will start? Answer. Yeah, so I'll start like hoisting is basically to define a variable outside the function, and it is a global variable declaration. In that, it it will work like whenever it works from bottom to top like that. So that is called hoisting in such a way. So Your very answer. breakable answer I Your tell. answer is wrong. Yeah. Okay. So you have not prepared for JavaScript right now. Sorry. You're not prepared for JavaScript right now as well, because this is the very basic question of JavaScript. So answer, Yeah, you have I started know the your mean. answer. You started with uh, the way only we should answer. So hosting is nothing but like this. You started correctly. That is what I Hmm. meant to say. But your answer is wrong. You have given answer in proper way, but your answer. Okay. I mean, I know hoisting like, but not very clear way. So, Mhm. or See here, maybe I don't Girish. know So to answer the even question. 2 years of experience, if I Hmm. ask you this basic question, then you should answer this, correct? If you are Okay. not able to answer this, then the first impression is a, you know that the first impression is good, then whole things are good. Yes, yes, Okay, exactly. so that's where things come. So in this mock interview, that's fine. So at least I will try to more comfortable to you to giving the real interview. So that's Okay. where I'm trying to help. So that's why I directly told you this. Your answer is wrong. Okay. Okay, so you should have to prepare more about a little bit about JavaScript. Yeah, And I'm doing the preparation for that. okay, so how many interview have you given as of now? Like I've given around more than 10 to 12 interviews. And because of the fear, like I have not cleared, so I just missed around major interviews like Infosys and IBM also. So, So you yeah. got rejected from them as well? No, I haven't given the interview because Okay, I you thought have I'm not. not prepared for that. Correct. So don't give. Once you are comfortable, then only you should give answer Yeah, interviews. Otherwise, you will lose those things. yeah. Like I'm thinking, like I will be well prepared. Then only I can, because there is a only single type of chances up in Yep. 30.
So Three if you months. miss, then almost 6 months will be the cooling period for each company. Okay. Okay. So can you share your screen? I will start with JavaScript basic question, then we'll move to Angular. Yes, sure. Can you open a Yes. Screen. playcode.io? Yep, I can see. Code a play, So what I have to do? open a URL. Open Your a voice. open a new tab and put play code. So remove this. I will take your interview as kind of the 2 years of experience only. Okay. So I will not ask many in-depth question. Okay. So as we talked about hoisting earlier, correct? Remove remove everything from there. Okay. So can we start then? Yeah. Okay. So can you please tell me what is difference between where and let? You can try to you can explain me in the code as well. That is fine. Yeah. So where we can redeclare where, for example, where uh, a is equal to 4. So So if you print now, what it will print? while it will. Put a console. Girish. One second. Yeah. Put a console.log. Write down over there console.log. Okay. Answer is there 2 4. It is there already. Yeah, 2 4. So Okay. yeah, I got it. Yep. Means it will not going to give an error, any kind of. It will run both the variables, whatever the declaration. But in a const, if and let, it will not going to. It will give a syntax error. For example, let. Is it running? I don't know. It is already running. It is. It is printing 2 4. Yeah. So you know the concept of where and let. First tell me Sorry. what is exactly let? Why they have introduced let? No idea. Like these are the keywords we need to declare. For example, uh, uh, like let means any value we are assuming to declare in particular element or type, we can say. Mhm. Please read about it. It's a very basic thing, Girish. Can you open a chat window? No, you are already sharing your screen. There is a chat option of the left side of the screen share below. Yeah. Okay. Just copy that array and put it. I have to paste it here. Sorry. Yep. Actually, right click is not working for me. I'll declare over here then. Create an array. Okay, Yes. that's fine. Okay. I want to get sum of all this element, Sum of. all these things which we have in the array. How I want to get the total of the element you have in the array. How can you do this? Yeah, I'll add some function.
We can add through the sum function, but it is not working for me. Then do manually. If you don't use a built-in function, then how can you do this? Without function, without built-in function, how can Because we have defined let array we have defined after that uh, we can use the sum function directly. I'm saying, see, interviewer will not ask you to use that built-in function, okay, because he want to check your logic. If you say I can use a built-in function of sum, then what is the use of this question to ask? Because I want to check your logical thinking, and you are coming again and again on the sum function. So that's where the interviewer will think that you are not able to logically think better. So that is what I'm asking. Whenever you are not able to find such kind of things, try to write down your own code. Okay, so if I want to get the sum of this array, what I have to do? Can I use for loop? Can I use any array method which we have? Filter, reduce. So you should talk about this. So I can use directly for method also. So there is array methods. Have you used reduce method? So for example, let yeah, Wait. I'm asking one thing. I'm asking, have you seen reduce method of JavaScript? yeah, reduce method I've gone through Can also. we use this? What is the use of reduce method? Do you know? It's kind of like it works as a reducer. I mean, No, Girish. to get for example, to some, I can directly use the reduce method, right? Do use whatever you want to use. Just give me the sum. What is the use of document over here? Sorry. What is the use of document over here? I mean to print the like sum of the array which I have declared over But we're talking about array, not a document. What is document, first of all? to print गिरीश, तुमने कभी काम किया एंगुलर में थोड़ा बहुत? प्रिंट अभी तो कंसोल डॉट लॉग लिखा था यार, ऐसे क्या कर रहे हो? कंसोल डॉट लॉग concept. यूज कर, कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं ना प्रिंट करने के लिए, तुम डॉक्यूमेंट में कहाँ पे घुस गए? अरे यार ऐसे मत करो यार, अभी तो प्रिंट किया था तुमने दो और जाए। जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम आईडी मतलब या क्लास ये सब प्रिंट नहीं कर सकते थे। क्लास कहाँ पे है भाई? अपने पास एरे है यार, ऐसे मत करो ना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बहुत तुमको बता सकता हूँ इंटरव्यू में, देखो, इंटरव्यूअर कंसोल डॉट लॉग है भाई। कंसोल डॉट लॉग एरे, यस यस। okay, this is the method to print. Put arr, it will print under console. अभी हमको सम करना है, तो अब तक तो तुम इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दिस इज अ प्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो यार, सिंपल क्वेश्चन था। अगर मेरे को सम करना है, मेरे पास कुछ मेथड नहीं है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, एरे के लेंथ तक जाऊंगा, एक एक एलिमेंट उठाऊंगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, सम इक्वल टू एरे एलिमेंट को ऐड करते जाऊंगा, उसमें डालूंगा। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। तुम मतलब वहां तक गए ही नहीं, तो इंटरव्यूअर तो वहां से ही निकल जाएगा फिर। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा लॉजिकल कितना ठीक है वो समझ में आ रहा है। तुमने होस्टिंग का गलत आंसर दिया था क्लियरली। लेट और कॉन्स तुमको, मतलब लेट और वैर का डिफरेंस तुमको मैंने, वो भी तो बेसिक ही क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक है यार। तो मुझे लगता है तुमको ना बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, इसलिए तुम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो यार, मैं आगे भी नहीं गया, आगे आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन है इन डेप्थ वाले, मैं आपको पूछ भी नहीं रहा हूँ हाँ प्रैक्टिस अभी। थोड़ी कम होगी। हाँ,
प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। और ठीक है, अभी मतलब मैं भी क्या बोलूँ अभी आपको। अगर देखो मैं, अगर किसी का इंटरव्यू लेता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सामने वाले से उसने प्रिपेयर किया होगा। जी। करेक्ट। तो अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब आप ही प्रिपेयर नहीं हो, आपको सिर्फ मॉक इंटरव्यू देना था। अभी ये टाइम किसी और बंदे को भी जा सकता था जिसने प्रिपेयर किया होगा। नहीं, तो मैंने एक्चुअली मैं देखना चाहता था कि मतलब क्या ही चल रहा है मतलब जीवन में। अभी एंगुलर का मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है, बट एक जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है वो नहीं पता है, मतलब वही समझ नहीं आ रहा है, यही मैं अटक रहा हूँ बार नहीं, बार। मैं तुमको वही पूछा, तुमने एंगुलर में सच में काम किया है क्या? जी, काम किया है मैंने एंगुलर में। ओके। ठीक है, एंगुलर के बारे में बात करते हैं फिर। जी। ओके। मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट मुझे आंसर दीजिए कि कैसे करेंगे। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी। ओके, समझ लो आपके पास एक वेब पेज है। ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पास हेडर है। जी। ओके, जैसे फ्लिपकार्ट का रहता है, समझ लो ये फ्लिपकार्ट है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे कार्ट का आइकन रहता है एक। ठीक है, यस। कुछ तो रहता है ऐसे। यहाँ पे आपका यूजर का आइकन रहता है। इस पर क्लिक करते हो तो आपका मेनू आता है। करेक्ट। जी। अभी समझ लो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, दूसरा है। हम्म। ऐसे करते करते मेरे पास समझ लो 10 प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है नीचे। ठीक है। जी। जब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा, हम्म। तो समझ लो मैंने एक बार ऐड टू कार्ट किया। ठीक है। तो ये जो आइकन है ना यहाँ पे, इसके साथ मुझे एक दिखता है, तुमने कभी देखा है कार्ट में ऐड करते हैं तब? हाँ। देखा है। ठीक है। अभी समझ लो मैंने नोटिफिक इसको क्लिक किया तो यहाँ पे दो होता है। जी। इसको क्लिक किया तो तीन होता है। हम्म। तो क्वेश्चन है कि हम ये एंगुलर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे कोड लिखेंगे। मतलब आपको कोड नहीं लिखना है, आपको जस्ट बताना है कि मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो क्या करोगे? ये सिंगल पेज नहीं है। ठीक है। ये तुम्हारा एक अलग कंपोनेंट है। और ये नीचे का जो है ना, राउटर आउटलेट है तुम्हारा, समझ लो ये पूरा का पूरा राउटर आउटलेट पता है आपको? जी। जी, नेविगेट मतलब। राउट्स को नेविगेट करने के लिए हम राउटर हाँ, आउटलेट यूज। ठीक है। हाँ। और ये जो है ना तुम्हारा ऊपर का, ये नेविगेशन बार है। ठीक है। तो जी। समझ लो तुम्हारे पास ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर तुमने नैव बार लिखा है ऊपर ऐसे करके। और नीचे राउटर आउटलेट है ऐसे। ठीक जी। है। ये राउटर आउटलेट यहाँ से आ रहा है, तुम्हारा नेविगेशन बार यहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारा ऐप कंपोनेंट है। इसको क्लोज किया है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो अभी मेरे को ये राउटर आउटलेट की जो चीज़ें है ना, इसका कम्युनिकेशन करना है इसके साथ, जो मेरे को यहाँ पे काउंट बढ़ा कहते हैं। तो मैं कैसे करूँगा? अभी मैं तुमको टेस्ट करूंगा कि तुमने एंगुलर में कितना काम किया। लाइक बेसिकली टू ट्रांसफर द डेटा, मतलब जो हम एक इस कंपोनेंट पे कर रहे हैं जहाँ पे सारे चीजें डिफाइंड है, और वहाँ पे एक बटन लगा है एड टू कार्ट वाला। तो हम्म। वाइल क्लिकिंग ऑन एड टू कार्ट, जो भी डेटा है वो इस वाले कार्ट वाले कंपोनेंट में मूव कर देगा, या डेटाबेस में। सो इसके लिए मतलब ऐसा है कि अ, सिर्फ अगर नोटिफिकेशन देखना है तो हम एक इवेंट लगा सकते हैं कौन सा इवेंट? बटन पर, एड टू कार्ट पर। हम्म। और अगर हमें मूव करना है कार्ट पर डायरेक्टली एक बटन से, नहीं तो नहीं हम। नहीं, देखो देखो, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मैंने 10 ऐड किए यहाँ तक आते आते, तो मेरा यहाँ पे हाँ, 10 होना चाहिए बस। आपका नोटिफिकेशन बार पर 10 बस शो मेरे कर को रहा है। आइकन में 10 दिखना चाहिए बस। हाँ, तो हम बटन पर इवेंट क्लिक ऐड कर देंगे, कौन सा जो कि। इवेंट? लेकिन ये तो कंपोनेंट अलग है ना तुम्हारा, इसको कैसे हाँ, पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ? हम उस कंपोनेंट को लाइक कनेक्ट भी करेंगे ना। कैसे करोगे, क्या करोगे? जैसे ही उस बटन पर क्लिक करते हैं वो डेटा, मतलब वो कंपोनेंट्स को कनेक्ट एट द रेट इनपुट ऐड करके हम टीएस फाइल में उस चीज को, जो पेरेंट लेकिन मतलब मेन चाइल्ड मतलब इस वाले कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में मूव कर रहा होगा। तो हम बेसिकली एक इवेंट्स क्लिक से
वो दूसरे कंपोनेंट में एट द रेट इनपुट डेकोरेटर यूज करके ऐड कर रहे होंगे, कौन जिसके थ्रू कौन वो रुको रुको, कौन, नोटिफिकेशन वेट वेट, कौन रिंग्स पेरेंट है होगा। और कौन पेरेंट है इसमें और कौन चाइल्ड है इसमें? पेरेंट्स एज इन जहाँ पर ये स्क्रीन विजिबल है, जहाँ पर मतलब हम आइटम्स शो कर रहे हैं, वो पेरेंट्स मान के चलते हैं। और जो कार्ट है वो चाइल्ड है, जिस पर हम मूव कर रहे हैं। नहीं उस मतलब ये देखा ही नहीं तुमने मैंने क्या बोला था। जी। ये तुम्हारा नेविगेशन बार है, ठीक है। ये तुम्हारा राउटर आउटलेट तो ऐप कंपोनेंट यहाँ पे है, ठीक है। ये तुम्हारा पेरेंट है। जी। तो तुम ऐप कंपोनेंट को टच करोगे सीधा इसके लिए। नहीं, समझा नहीं आप। बोल रहे हो कि ये नेविगेशन बार है, ये सारी चीजें हैं जो मेन पेरेंट्स कंपोनेंट आप बोल रहे हो? तुमको देखो इसमें इनपुट आउटपुट नहीं चलेगा। क्यों? इसमें इनपुट आउटपुट चलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो यार पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अलग ही राउटर आउटलेट मतलब तुमको तुमको पता होगा मे बी, लेकिन तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो। ये अलग कंपोनेंट है पूरा। और नीचे हम्म। राउटर आउटलेट मतलब पूरी ही दुनिया अलग है इसके नीचे वालों की। मेरे को राउटर आउटलेट के कंपोनेंट से नेविगेशन बार को टच करना है। तो इनपुट आउटपुट का तो मतलब ही नहीं रहा ना, ये दोनों तो सिबलिंग कंपोनेंट हो गए ना। ये थोड़ी ना किसी मतलब ये कहाँ पे किसी पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में है? ये चाइल्ड है ही नहीं ना किसी का यहाँ पे। हम्म। इवेंट ट्रिगर करोगे दैट्स इट, करेक्ट। मतलब एक ऐड टू कार्ट रहेगा यहाँ पे बटन, एक इवेंट क्लिक होगा, एक होगा। लेकिन यहाँ से एक यहाँ पे कैसे जाएगा वो क्वेश्चन है। उसको कैसे पता चलेगा नेविगेशन बार में कि भाई मेरे को एक किसी ने क्लिक किया है और मेरा ऐड टू कार्ट वन हुआ है। फिर से मैं दो करूंगा तो क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट? इनपुट आउटपुट इज, तुमने सब्जेक्ट सुना है? सब्जेक्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्जेक्ट एंगुलर में सब्जेक्ट करके रहता है कुछ। नहीं क्लिक हो रहा है। तुमने समझ नहीं आया। यूज किया होगा लेकिन तुम भूल गए शायद। मैं बताता हूँ। हम्म। ठीक है, देखो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है ना, तुम उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वैल्यू इमिट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा ऑब्जर्वेबल है वो वैल्यू इमिट करता है, करेक्ट। और तुम हम्म। सब्सक्राइब करते हो उसको, तो तुमको डेटा मिलता है। तो ये जो सब्जेक्ट रहता है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ एक ये रहता है अपना फंक्शन है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर में या फिर आरएक्सजेएस का है एक्चुअली वो। तो वो क्या करता है ना, वैल्यू नया तुमको मतलब देखो दो दो वे से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। या टू वे अगर, डेटा। हाँ, टू वे डेटा चलता है। इससे तुम इमिट भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी तूने बोला ना कि इवेंट लिखेंगे ऐड टू कार्ट पे। तो मैं क्या करूँगा, उस पे सब्जेक्ट को नेक्स्ट करके एक नई वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही वो नई हाँ। वैल्यू सेट हो गई तो क्या होगा ना, तुम जो तुम्हारा जो नेविगेशन का कंपोनेंट रहता था ना इधर ऊपर, तुम उसको सब्सक्राइब करते थे, ठीक है। तो जैसे ही इसको नेक्स्ट मिलता था तो सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाता है कि भाई कुछ तो हुआ है। तो तुम जितने तुम्हारे पास सब्जेक्ट में जितनी वैल्यूज थी वो तुम यहाँ पे इमिट करोगे और उसका लेंथ यहाँ पे दिखाओगे नेविगेशन बार में। तो यही मैं तुमको पूछ रहा था कि तुमने किया है कि नहीं इस पे इतना काम। ये तो सर, जैसे एंगुलर मटेरियल में हम डायरेक्टली भी पूरा फंक्शन उठा के रख सकते हैं, जिस पे कॉल करा सकते हैं इवेंट पर। एंगुलर मटेरियल कहाँ से आ गए बीच में? जो आप बोल रहे हो सब्जेक्ट, वो मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या? नहीं भाई गिरीश, तुमको ना पढ़ने की जरूरत है सच में। देखो इसमें एंगुलर मटेरियल का कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, कुछ है ही नहीं। ये मतलब उसके रिलेटेड चीजें है ही नहीं है। एंगुलर मटेरियल इज डिफरेंट थिंग। रुको वो हम्म। भी दिखाता हूँ। एंगुलर, पहली बात मुझे बताओ एंगुलर मटेरियल क्यों यूज करते हैं? मतलब बिहेवियर और अपीयरेंस को बेटर करने के लिए एप्लीकेशन का। तो ये बिहेवियरेंस की चीजें थोड़ी ना डेटा के रिलेटेड है ना। मुझे डाउट आ रहा है गिरीश तुम पे भी, हाँ। नहीं तो स्ट्रक्चर। नहीं नहीं ठीक यार, है मेरे को सर। ना सच में डाउट आ रहा है नहीं। अभी। यस देखो मुझे सर। बताओ बूटस्ट्रैप क्या है फिर? क्या? बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप?
देखो मैं भी बूटस्ट्रैप तो। इज आल्सो द सेम, लाइक वो भी हाँ तो अपना। तुम बूटस्ट्रैप से डेटा शेयर कर सकते हो क्या? नहीं, बूटस्ट्रैप से तो तो फिर नहीं करते। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप ये क्या है ना, तुमको इनपुट एलिमेंट्स है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ तुम्हारा काम क्या करते हैं, जो डॉम में दिखता है ना, तुमको इनपुट डालना है, फाइल अपलोड डालना है, नेविगेशन बार बनाना है, वो सब कुछ तुम बूटस्ट्रैप और एंगुलर मटेरियल से करते हो। लेकिन जो कम्युनिकेशन है तुम लिखोगे ना उसके लिए कोड। इसी के लिए तो एंगुलर डेवलपर की जरूरत है ना, नहीं तो कोई भी कर लेगा वो। अगर वो कंपोनेंट करने लग गए सब कुछ, तो फिर तो हमारे जॉब ही निकल जाएंगे। करेक्ट। अभी मुझे सर क्या करना चाहिए, मतलब एक ये सारी चीजों मुझे में बेटर मुझे तरीके से कंसेप्चुअल सीखने के लिए। हाँ, तो तुम यूट्यूब पे जाओ पहले, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक प्लेलिस्ट पकड़ो, अच्छे से रिव्यू करो, अच्छे से उसके बारे में पढ़ो, नोट डाउन करो। उसके बाद में तुम्हारे खुद के नोट्स बनाओ कि होस्टिंग अगर किसी ने मेरे को पूछा तो मैं आंसर कैसे करूंगा, तुम्हारा खुद का नोट्स रहेगा ना, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। ठीक है, 1 महीना लो, पढ़ाई करो प्रॉपर। वैसे ही फॉर एंगुलर भी करो, क्योंकि ना ये बहुत इजी, मतलब ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मैंने जो पूछा हो, लेकिन हम्म। एटलीस्ट मैं तुम्हारा थिंकिंग पावर देखना चाह रहा था कि तुमने सच में काम किया है, कितना काम किया है। ठीक है, अगर तुमको सब्जेक्ट नहीं पता है ना, तो फिर तो डाउटफुल है सब्जेक्ट, क्योंकि ना वो एज अ डेटा शेयरिंग के लिए इनपुट आउटपुट छोड़ के फिर तुमको सर्विस और सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इवेंट्स भी है हमारे पास, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको। अगर तुमको सब्जेक्ट पता रहता तो फिर मैं तुमको बिहेवियरल सब्जेक्ट पूछने वाला था। अगर तुमको दोनों पता रहता था तो मैं रिप्ले सब्जेक्ट पूछने वाला था, मतलब ऐसे में स्टेप बाय स्टेप जाने वाला था। लेकिन तुम हर बार पहले स्टेप पे अटक जा रहे थे, फिर मैं आगे जा ही नहीं पाया। समझो। करेक्ट, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि क्या होगा ना तुम्हारा, देखो पहली बात तो तुम इंट्रो दोगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, तुम डीमोटिवेट होगे। करेक्ट। सेकंड चीज, हाँ। डीमोटिवेट होंगे तो ज़्यादा इंट्रो नहीं दोगे, तो फिर तुम बाद में ऐसे हुआ कि छोड़ो यार, क्या ही इंट्रो दूँ, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। नहीं सर, मैं इसीलिए मतलब मॉक के लिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू और रिस्पॉन्स नहीं पता, समझ नहीं पा रहा हूँ, और क्योंकि मतलब देखो इसीलिए मुझे पता आपके चला। आंसर मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। जी। आपके जो आंसर थे ना, अभी देखो एरे का सम करना यार बहुत सिंपल है, तुम गूगल पे भी डालोगे ना हाउ टू कम सम ऑफ द एरे, तुमको हम्म। 4 लाइन का कोड में सब हो जाता है। लेकिन आप वो थिंक ही नहीं कर पा रहे हो कैसे करना है, तो फिर डाउटफुल है ना। तुमको अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस चाहिए ज़्यादा, तो टॉपमेट पे जाओ, मैंने वहाँ पे एंगुलर और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आंसर डाले हैं पूरे विथ आंसर। अगर हम्म। तुमको लेना है तो वहाँ से ले सकते हो, तुमको थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा काम करने, मतलब पढ़ने के लिए। मैंने इसीलिए वो बनाया है कि मैंने ऑब्जर्व किया बहुत से लोगों को ना सिंपल सिंपल चीज़ें पता नहीं रहती। ठीक है, तो तुम रिलेट कर पाओगे कि मैंने होस्टिंग पूछा था तो इसका मीनिंग क्या था, उसमें एग्जांपल दिए मैंने कि अगर होस्टिंग किसी ने पूछा तो तुमको क्या क्या बताना है। हाँ सर। और उसी के बाद मैंने एंगुलर का भी बनाया है, अगर तुमको उसमें से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हाँ सर, मतलब करना ही है, बट यही था कि करो यार, डायरेक्शन। नहीं नहीं गिरीश, करो करो, अगर तुम्हारा पैकेज कम है ना, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर आउटसाइड। थोड़ा अच्छे कंपनी में जाओगे, थोड़ा अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा वर्क मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, थोड़ा सा चेंज आता है ना, तो थोड़ा सा लाइफ इजी होता है, थोड़ा सा काम अच्छा मिलता है, तो नई नई चीज़ें सीखने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए यार तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर तुम उसमें अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे तो तुम्हारा लाइफ फिर तो जहाँ पे है वैसे ही रहते, फिर ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो देखो अगर अब तुम अगर ज़्यादा मतलब तुम्हारे आंसर अगर मेरे को लगते थे कि नहीं यार सच में गिरीश अच्छा आंसर दे रहा है, तो मैं भी तुमको थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता था फिर आगे जाके। नहीं यार ऐसे फिर मैं तुमको बताता था। अगर तुम दो, ठीक है तुम क्लियर अभी इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो मैं बताऊंगा। अगर मैं हम्म। तुमको बोलता था 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा था एंगुलर में, हम्म। फिर तो तुम गए फिर। अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि तुमको 4 साल नहीं लगाना चाहिए। हाँ सर, मतलब हाँ, तो लेकिन यार तुम बोल रहे हो कि मैंने एक्सप्रेस में काम किया, तो लॉजिकल थिंकिंग तो तुमने काम किया होगा यार पूरा। मेरे को डाउट आ रहा है फिर भी। एक्चुअली मैंने 9 से 10 मंथ जो नई माई एक्सपर्टाइज डॉट आई ओ है, इसमें काम किया है पूरा। लेकिन आपने लॉजिकल वाली चीजें लिखी है क्या प्रॉपर होती है? लॉजिकल सर, मतलब मतलब बिजनेस ज्यादातर। लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, समझ लो कुछ एपीआई आ रहा है, उसमें से कुछ डेटा आ रहा है, तुमको कुछ पार्स करना है, कुछ कंडीशंस लिखनी है उसके डिपेंड,
जैसे तुमको कुछ चेंजेस करने हैं उस डेटा में, फिर डेटाबेस में सेव करना है, डेटाबेस से सब लेके आते। गूगल से मैंने किया है, मतलब ज्यादातर चैट जीपीटी हेल्प के लिए। नहीं ना भाई, फिर सीखोगे कब तुम? तो एज ए टास्क में वो चला जाता था, बट देखो अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो वो कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने इवन नोट्स भी नहीं रैंडम बनाए हुए हैं, जो मतलब शुरुआत से नहीं बनाए, तो वो भी मुझे थोड़ा सा सिस्टमेटिकल नहीं करना है। नहीं मैंने नहीं किया है, पढ़ाई तो की नहीं। है, बट मैं थोड़ा हाँ सा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे प्रैक्टिस पहले कर लिया, काम पहले कर लिया और सीखा बाद में। ना, क्योंकि तुमने चैट जीपीटी किया है ना, तुमने ढूंढ ढूंढ के नहीं किया है ना प्रॉपर। तुम जब हाँ खुद कोड लिखते हो ना गिरीश, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर तुम चैट जीपीटी से उठा उठा के डालोगे सब चीजें, तो फिर तो दिक्कत है ना। देखो, हर कंपनी में चैट जीपीटी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, वो मतलब क्या है कि पहली देखो जॉब जो यार, टेस्ट में अभी थी वो मेरे गई, तो उसके बाद अभी हमको जॉब तो दस चाहिए साल होगी। मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए यूआई में। अभी हम्म, चैट जीपीटी आया है पिछले 2 साल में। 8 साल तो हमने काम किया है ना, कहाँ से ना हाँ कहाँ से ढूंढा होगा ना हमने भी। तो वही चीजें है, तुम ढूंढो, कहाँ से भी ढूंढो, कहाँ से भी लिखो, लेकिन उसको समझो पहले कि क्या लिख रहे हो।